Dear students, today I am going to discuss about the reaction of aldehyde ketones with alcohol as well as with grignard reagents. Now, alcohol is a very weak nucleophile, and that is why we require some acid like dilute H2SO4, in which hydrogen carries partial positive charge and R-O carries negative charge. And oxygen is more electronegative than carbon, and as such H positive is attached to oxygen and R-2 negative is attached to carbon. The reaction takes place further, and as a result H and OH water is lost and we get this compound corresponding to acetaldehyde. We get acetal, and for acetal formation we require two alcohol molecules, and this here is only one alcohol is utilized, and that is why we call it as hemiacetal. Hemiacetal. Now acetaldehyde with ethanol in the presence of H positive goes to oxygen and C2H5O is attached with carbon. The reaction takes place further, and as a result H and OH water is lost, we get this compound. This is acetal, but in IUPAC system both are ethers. As well, the IUPAC name is 1,1-diethoxy ethane, and here ether as well as alcohol function group is present, and alcohol takes priority, and as the IUPAC name is 1-ethoxy ethane 1,4. Similar procedures followed for ketone. H positive goes to oxygen, R-O goes to carbon, because R may be same, may be different. The reaction takes place further, H and OH, water is lost, and we get ketone. In case of aldehyde, acetal; in case of ketone, ketone. And here only one alcohol is utilized, and that is why here we call it as hemiketone. For example, acetone with ethanol, H positive goes to oxygen and C2H5O goes to carbon. The reaction takes place further, H and OH water is lost. Now in this case 1, 2, 3, the ethoxy groups are present at second position, and 2,2-diethoxy propane. While in this case 2-ethoxy propane 2O. The similar procedure is followed for cyclic compound, dicyclopentanone. H positive goes to oxygen and C2H5O goes to carbon. The reaction takes place further, and you will get diethoxycyclopentanone. And this is ketone, and as well this is ketone. Now let us take up reaction of aldehyde ketone with grignard reagent followed by hydrolysis. The examination tips are: formaldehyde with grignard reagent followed by hydrolysis gives primary alcohol with higher number of carbons. Higher additional carbons are utilized from the grignard reagent. And aldehyde other than formaldehyde with grignard gives secondary alcohol. higher number of carbons.
and ketones with the grignard reagent and hydrolysis in tertiary alcohol. Let us take up here first case, formaldehyde with grignard reagent. और यहाँ पे भी हमें क्या पता है, MgX के ऊपर पॉजिटिव और R के ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट किसको जाएगा, ऑक्सीजन को, और नेगेटिव पार्ट कार्बन को। डायरेक्शन टेक्स प्लेस फर्दर। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, HNOH, MgXOH and you will get RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। जितने भी एडिशनल कार्बन यूज होंगे वो कहाँ से यूज होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जैसे कन्वर्शन है फॉर्मल्डिहाइड टू एंड प्रोपाइल अल्कोहल, तो फॉर्मल्डिहाइड के पास कितने कार्बन है, 1, और प्रोप के अंदर कितनी है, 3। तो हमें 2 एडिशनल कार्बन चाहिए, वो कहाँ से लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, C2H5 MgBr। तो क्या बन जाएगा, HCO MgBr H and C2H5। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, -MgBr OH C2H5 को कैसे लिखेंगे, CH3CH2। आगे फिर क्या आ गया, CH2। और ये कन्वर्शन कंप्लीट हो गई फॉर्मल्डिहाइड टू एंड प्रोपाइल अल्कोहल। जितने भी एडिशनल कार्बन चाहिए वो कहाँ से इस्तेमाल होंगे, ऐसे ही कन्वर्शन है फॉर्मल्डिहाइड टू आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास तो कितने कार्बन है, 1, और ब्यूट के पास कितनी है, 4। तो अगर ब्यूट के पास हुआ तो मुझे एडिशनल कितनी चाहिए, 3, लेकिन मुझे एन ब्यूटाइल नहीं चाहिए, आइसो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम। वी प्रेफर ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो राइट में रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा स्लो होगा, और उसी ढंग से HCOMgBr HCH3CH3 या H हो गया। हाइड्रोलिसिस पे -MgBr OH and we get CH3CH CH3CH2OH। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल है, क्यों, अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड टू साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास तो 1 ही कार्बन है, वो तो मिथ में आ गई। एडिशनल क्या चाहिए, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो HCHOMgBr और नीचे साइक्लोहेक्साइल। देन हाइड्रोलिसिस, we get CH2। तो ये अभी फॉर्मल्डिहाइड का केस किया है। सिमिलर प्रोसीजर एल्डिहाइड के लिए लगेगा। एल्डिहाइड है, अब इसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को MgX और यहाँ पे RH। फिर हाइड्रोलिसिस और हमें क्या मिले, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसा कि आपको एग्जामिनेशन टिप्स में बताया गया। एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। लाइक एस्टरडिहाइड तो सेकेंडरी बताया। अब एस्टरडिहाइड के पास कितने कार्बन है, 2। बनाना क्या है, ब्यूट, 2 एडिशनल कार्बन चाहिए। तो वो एडिशनल कार्बन कहाँ से लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लेंगे। तो यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे। उसी ढंग से CH3
CH4 MgBr CH2 CH. Then hydrolysis minus MgBr OH, we get CH3 CH OH CH2 CH. Second return CH3 CH CH2 CH. और यही काम हमने कीटोन में करना है। कीटोन में क्या बनेंगे? टर्शरी अल्कोहल। तो मैंने यहाँ R-MgX लिख दिया। तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा? MgX। कार्बन को क्या मिलेगा? R-। हाइड्रोलिसिस होगा। लाइक एसीटोन टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एसीटोन के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये एसीटोन है, प्रोपेनॉन है, 6 कार्बन है। और हमें कितने कार्बन का चाहिए? 4 का। तो एक कार्बन और चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? ग्रिग्नार्ड के पास।